Hello, friends. Welcome to the second episode of Bullet Points in Forensic Medicine. Before this, we have already done the first section of Bullet Points in Forensic Medicine that was aired on 25th of this month. Today, we are with Bullet Points in Forensic Medicine 2. Again, I'm telling you intention क्या है इस series का. The intention of this series is to provide crisp, precise information to all the students who are either appearing for INICT examination or for NEET PG examination or for FMGE examination, ताकि वो उन एग्जामिनेशंस में जो फोरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर 100% कर पाएं, so that we are able to score 100% in forensic medicine. This is what I want, right? So taking further bullet points in forensic medicine 2, आइए देखते हैं आज के दो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हम पहले देखने वाले हैं, who are going to lead us to our bullet points of the day. The first question is, a dead body having ligature mark on the neck is found in a park. Okay, both hands are tied at the back. The body has greenish discoloration and purple lines appearing on the chest, right? So the body has greenish discoloration and purple lines have started to appear on the chest. What is the probable time since death? Although it looks like it is a case of strangulation, जो कि पहले दो लाइंस में देख करके लग रहा है बॉडी को, बट इसमें ना कॉज ऑफ डेथ नहीं पूछा हुआ है. इसमें हमको डेथ, कॉज ऑफ डेथ की पिक्चर दिखा करके बॉडी के डिकम्पोजिशन की भी पिक्चर दी हुई है और हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबल साइन टाइम सिंस डेथ. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इफ इट इज सेड दैट डेड बॉडी हैज वेल डेवलप्ड राइगर मॉर्टिस ऑल ओवर, the time since death will be. Again, well developed rigor mortis in a body, what would be the time since death? So इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं जहां पर हमें टाइम सिंस डेथ के अराउंड आंसर करना होता है, what are the important informations that we need to know which can help us in determining time since death? आइए देखते हैं. So these are the things that we need to remember. What are the important changes that happens in the body after death which can help us in determining the time since death, right? So the first is few minutes to 1 hour. Kervokian sign develop. We know this sign is seen ophthalmoscopically. ऑप्थेल्मोस्कोप से ही देख सकते हैं. ऑब्वियसली आई में देखेंगे. ऑल्सो नोन एज कैटल ट्रकिंग, ऑल्सो नोन एज कैटल ट्रकिंग साइन, राइट? सेकेंड इज व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन 2 hours? हेजीनेस ऑफ कॉर्निया and rigor starts to develop. Now this is an important phase. Rigor starts to develop in 2 hours, right? What happens in 4 hours? Tachynoir are seen. Tachynoirs are very important. Tachynoir scleroticus, which are due to dehydration of the eye, and they are triangular opacities which are seen in the sclera. They start to see. So if we can see tachynoirs, we can say that the body has been somewhere close to 4 hours, right? And we start to see the post-mortem staining. Okay, developed post-mortem staining can be observed around 4 hours. 6 hours, the cornea becomes opaque. Now this is important. Okay, this is important. The cornea becomes opaque, so it is not usable now. So any person whose cornea has to be harvested for grafting or transplantation, the window time period is 6 hours. Okay, and this is the time period where we start to see beginning of the fixation of PM staining. Again, very important thing, fixation of PM staining begins. Okay, it starts. Fixation is a process which begins at 6
hours, and it gradually keeps on becoming more and more ज़्यादा fixation, and complete fixation हो जाता है उसका 12 घंटे में, which we can see is here fixed PM staining at the end of 12 hours. So if we will say what is the time period of fixation of PM staining, the time period will be 6 hours to 12 hours after death. और PM staining कहाँ डेवलप होती है? Develops in the dependent portions of the body. So अगर कोई डेड बॉडी है और वो एक ही पोजीशन में पड़ी हुई है, 6 घंटे के बाद में जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग उसके डिपेंडेंट पोर्शन पे डेवलप होगी, वो फिक्स होना चालू हो जाएगी उस जगह पे, और 12 घंटे तक कंप्लीटली फिक्स हो चुकी होगी. सो नाउ after 12 hours, if somebody is going to change the position of the body, the postmortem staining which has developed in the previous dependent position, it will not move away. वो वहां से move off नहीं करेगी. Okay, what else do we see at 12 hours? We see rigor mortis peaking up. The time period of peaking up of rigor mortis is somewhere around 12 to 18. So 12 घंटे के आसपास peaked rigor mortis मिलेगा, right? Greenish discoloration on the under surface of liver, right? This is again a very important sign, but it cannot be seen externally, because you understand, unless and until we open up the body, we cannot see the under surface of the liver, right? But another important sign which can be seen in the exterior of the body, which is a very important sign in the post-mortem decomposition of the body, that is greenish discoloration in the right iliac fossa, which is the next sign that we are going to observe here, right? Greenish discoloration in right iliac fossa. This sign is seen at 18 hours. Again, in many questions this has been asked. Okay, then 24 to 36 hours, there is gradual disappearance of rigor mortis. 36 to 48 hours, marbling starts. Again, a very important phenomena, marbling. What is marbling? Marbling is development of purple color lines in the vascular territories of the body, right? If I were to write for you, purple lines on the vascular areas of body. So if we were to revisit our question number 1, let's revisit our question number 1. एक मोमेंट के लिए वहां जाते हैं. क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में? द बॉडी हैज ग्रीनिश डिस्कलरेशन एंड पर्पल कलर लाइंस अपीयरिंग ऑन द चेस्ट, राइट? इस इंफॉर्मेशन के साथ में इफ वी कम बैक टू आवर टेबल, ग्रीनिश डिस्कलरेशन बॉडी में 18 घंटे के बाद होना चालू हो जाता है, एंड इट इज गोइंग टू पिक अप फ्रॉम राइट इलियक फोसा टू इन्वॉल्व ऑल द एरियाज ऑफ द बॉडी, राइट? बट मार्बलिंग begins somewhere around 36 to 48 hours, right? So if we go back to our question, मुझे आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से द बॉडी which has been found in the park, it has started to develop marbling, ये कितने घंटे पुरानी डेथ होगी मिनिमम? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, राइट. व्हाट एल्स डू वी सी? 3 to 5 days. नेक्स्ट, लूजनिंग ऑफ टीथ, स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट कम आउट. ये 3 से 5 दिन के कैरेक्टर क्वेश्चन में बहुत कम पूछे जाते हैं. 15 days to 3 weeks, adipocere generation can be seen, but that is seen only in those bodies which are found in highly moisture areas. जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ मिलेगी. 3 to 9 months, mummification can be seen developing on the body, but again ये मिलेगी वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही ड्राई एंड हॉट एयर का एरिया है, जैसे कि डेजर्ट. सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं मेजरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours, 18 hours, 24 hours, 36 hours to 48 hours, मार्बलिंग का टाइम पीरियड, एंड एडिपोसियर एंड मम्मिफिकेशन.
राइट। सो आज हमने इनका टाइमिंग्स देखा है इस क्रिस्प से वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में मे बी विल सी सम मोर थिंग्स अराउंड पोस्टमार्टम चेंजेस। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। राइट, विद दैट वी एंड दिस सेशन हेयर। मैं आपसे मिलूंगा बुलेट पॉइंट्स नंबर 3 में बहुत जल्दी। और मेरी कोशिश जारी है कि आपकी फोरेंसिक मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो होती रहे, आप अपने एग्जाम में फोरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से करो। राइट, आई विल सी यू इन बुलेट पॉइंट्स नंबर 3। बाय।